Good morning, student of class 9. So, ninth class, the previous day we discussed in exercise 3.5, sorry, 2.5. And I think we completed with this question number 7. So today we discuss the question number 8. So the 8 question paper. And question number 8 is given factorize, and first part here 8a³ plus b³ plus 12a² plus 6ab² plus 6ab²। समझ लो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a³ प्लस b प्लस क्या लिखा 3 into 2a² into 2 is 4, 4 3 is 3 into 2a into b²। Same thing है, 3 2 is 6a²। So factorize means we can use RHS to LHS। तो आपने जो प्रीवियसली क्वेश्चन लिखे थे उसका कन्वर्ट हम जानते हैं x³ plus y² plus 3x² plus 3xy² equal to हमारे पास क्या होता है x plus y। x की वैल्यू क्या है 2a, y is given b, so it is a 2a plus b equal to। That's clear? So student of class 9, in this way you can do it second part, it is a minus b whole cube, third part a minus b whole cube, fourth part a minus b whole cube. We discussed in its fifth part. The fifth part में other remaining part do yourself. If you have any doubt, any problem, you can send a message on my WhatsApp number. We can sort out your problem on next videos. Okay, so see, we discuss in its fifth part. Fifth part is given 27p³ minus 216 minus 9y³ p² plus 1/4 plus 1/4, then it is 3p whole cube minus 1/6 whole cube. Okay, then after a is given 3p, b is given this, so it is a minus 3, it is 3p² into 1/6। ठीक है, समझिए। So students, see, solve it। 3 3 is 9, 3 2 is 6, 9/2p² plus 3 into 3p into 1/6²। 3 3 is 9, 1/6², that is the 1/36। सॉल्व करेंगे तो 1/4, मतलब आफ्टर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। तो सच दैट आइडेंटिटीज ऑफ लर्निंग क्या है? x³ minus y³ minus 3x² और 3xy² equal to x minus y। What is value of x? 3p. What is value of y? 1/6. It is a 3p minus 1/6. Okay, so student, in this way we completed this question number 8. So then we discuss
in its question number, that is a 9. Okay, remain forward, do yourself. If you have any doubt, any problem, so you can send me message on WhatsApp number. So we can sort out your problem on next day or next week. Okay, so we can discuss on next question. In next question. Say question number 9. Question number 9. That is a verify in first part x cube plus y cube x plus y x square minus x square plus y square. Okay, then so first we can take it RHS. It is a x plus y x square minus xy x square. इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो गया x क्यूब मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर वाई, ये क्या हो गया x वाई स्क्वायर. सेकेंड y मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यानी कि प्लस x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x वाई स्क्वायर और क्या बचा होगा. So these negative positive cancel, negative positive cancel. We have find out only x cube plus y cube. So in this way, LHS equal to RHS. So student of class 9, you same you can solve it second part. Second part आप solve करें, ठीक है. तो हम next पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. प्रोडक्ट 10 है factorize of the following identities. क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने का मतलब LHS 2 हमें RHS बेटा वेरीफाई करना है. क्या वेरीफाई करना है? LHS से RHS. देखिए बेटा क्वेश्चन है इन फर्स्ट 27y प्लस 125z 27y क्यूब प्लस 125 क्या होगा z. बेटा इसको क्या राइट करेंगे 3y होल क्यूब and it is 5z. 27y cube means 3y whole cube. It is a 5z. So you know that identities, that is a cube plus b cube equal to a plus b in first bracket, a square plus b square and minus a. अगर का पॉजिटिव है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, नेगेटिव है तो a क्यूब माइनस. अप्लाई करेंगे a की वैल्यू है 3y प्लस y. सेकेंड क्या 3y 5z माइनस 3y इनटू क्या है. सिंपलीफाई करते 3y प्लस 5 3 3 so 25z minus 5 is a W. इस तरह तो same process in its second part you can write down 64 m cube minus 343 n cube. 64 का मतलब 8 m whole cube minus 7 n whole cube ये आप यूज करोगे. हो जाएगा बेटा? That's clear. So we enter in question number 11, 12 and 13. These all three questions are most important. Then see in question number 11. See बेटा 11 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Factorize
factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz minus 9xyz. How can we solve it? Let's see. It is in three. How can we? It is a factorize. We have need to factorize it. So, students, it is a 3x whole plus y cube plus minus 3x y equals to. You can write down this question in this form. So, such that we know that a plus b plus c minus 3abc a plus b plus c first bracket a square plus b square minus ab minus bc क्या हो गया माइनस c a हमारे पास क्या है 3x plus y plus z फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 3x square y square just plus c square minus plus z square minus ab. ab means that is 3x into 1 minus bc y into z minus z into minus just consider minus z into सिंप्लीफाई कर देते हैं. इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x plus y plus z. It is a 9x square plus y square plus z square minus 3x square. Just one student minus 3ab minus bc means y to z minus 3 minus 3x into c. So it is a minus yz minus 3x. That's the answer. Actually, we can use identities, then we can compare it, then replace the value of a and c that questions. Okay. So student, in this way, we completed this question. This in question take question number 11. Then we discuss in question number 12. See how can we solve its question number. See beta, most important question number 12. Question number 12. See beta. Question number 12. Verify that x cube y cube z cube minus 3xyz one by 2 x plus y plus z x minus y square y minus z square and z minus x square. ये क्वेश्चन ठीक है, समझ लो. So first we can take it is RHS. RHS is given x plus y plus z x minus y square y minus z square and z minus x square. So 1 by 2 x plus y square x square y square minus 2xy. ये हो गया y square z square minus 2yz. Which side it is? a minus b whole square plus z square plus x square minus 2x. सिंप्लीफाई करते हैं. 1 by 2
x plus 1